Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here in this video we are going to have a discussion on the general aptitude question which has been asked in the afternoon session of the 8th February. तो जिन भी बच्चों का 8th February afternoon session में था, ठीक है, एग्जाम गेट पेपर गेट 2026 का पेपर, उन सब के लिए हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस. So although these questions are memory based, okay, so let's have a discussion one by one. So I will start with first of all here the very first question, which is talking about analogy. As in the one shot revision and even in the quick revision of general aptitude also we had a discussion कि analogy type of questions surely will be there because ये ट्रेंड चल रहा है पिछले 2-3 सालों में. they are asking repeatedly, okay, from the analogy pattern. So that this thing I told you already in the last session of verbal aptitude where which we had on the वर्बल एंड स्पेशल एप्टीट्यूड. उस सेशन में हमने डिस्कस किया था और बोला भी था मैंने कि एनालॉजी के क्वेश्चंस आएंगे. हियर इन दिस सेगमेंट वी आर हैविंग टू क्वेश्चंस फ्रॉम द एनालॉजी. लेट्स चेक इट आउट. So my question is talking about complete the analogy. Water, then it is mentioned P is to food and Q. Whatever the relation we are having of the water with P, the same to same relation we should have food with the Q. ठीक है. Options are available with us. Let's check it out. Wet, critic, thirst, satisfied, thirst, hunger, drink or hunger. We know very well what is the object of water. Ma'am, the object of water or water is just okay for removing the thirst. ठीक है, water काम करता है thirst को remove करने का. Similarly, food is working for hunger. So water is for thirst. Similarly, food is for hunger. This relation will satisfy 100%. So we should have here water, thirst, food and hunger. So I think this should be the correct answer. जहाँ thirst और hunger, बाकी if you are checking the remaining options, it is not satisfying. Only this condition will give you the proper analogy. Whatever relation we are having between these two, it will be there. Okay, between these two also. Correct? Let's approach with the next one. Here we are having one very good question from the probability. Let's read out and then we will approach. The question is talking about a day can be either cloudy or sunny. ठीक है. Probability of cloudy is 0.5, which is 1/2, independent on the condition of other days. Then find the probability for any given 4 days such that it will be 3 cloudy and 1 sunny days. What you are asking? You are having, it is given to you the probability of cloudy. We can find out the probability of sunny also because in one day either cloudy will be there or sunny will be there. ठीक है. फिर उसके बाद आपको बोल रहा है कि when we are having 4 days, among these 4 days we need to find out the probability of having 3 cloudy day and 1 sunny day. ठीक है. Very simply we can solve this question. चलो, तो how we will go? First of all we can write down beta what is given to us. It is given to us probability of cloudy, right? Yeah. So probability of cloudy is given to us, which is I can write down 1/2. As it is given, या तो cloudy होगा या फिर sunny होगा. So total probability is always 1. So probability of sunny should be nothing but total 1 minus 1/2, which is always equals to 1/2. So these two things first of all we can find out very easily, beta. Okay. Now you are having 4 days. Among the 4 days, I am writing here what it is asking. It is asking required probability for 4 days. ठीक है. What we want? We want 3 cloudy and 1 sunny. ठीक है. 3 cloudy and 1 sunny day we want. ठीक है. When you are going with simply, I am going with the simple. आपको चाहिए 3 cloudy, तो 1, 2, 3 cloudy and 4th will be sunny. So cloudy probability of having cloudy is 1/2. Again cloudy 1/2. Again cloudy 1/2. ये cloudy के लिए probability होगी. When you will go with the sunny, you are having here 1/2 again. ठीक है. तो रिजल्ट विल बी 1/2 into 1/2 into 1/2 मल्टीप्लाई विद 1/2. बट इज इट नेसेसरी क्या ये इसी सीक्वेंस में हो? ये भी तो हो सकता है. द ऑर्डर कैन बी चेंज ना. सो वी कैन गो विद द इंटरनल अरेंजमेंट. अरे बाबा 3 क्लाउडी और 1 सनी है तो इट जस्ट लाइक दिस कि यू आर हैविंग हियर 3 रेड बॉल्स एंड 1 ब्लू बॉल्स. इट शुड बी लाइक दिस ना. तो इंटरनल अरेंजमेंट इनका तो हो ही सकता है. Although you need to arrange these 4 objects, but the internal arrangement will be there. And when you will go with the simply internal arrangement, या तो आप cases बना के देख लो एक एक करके, और case नहीं बना सकते, I will go with both the approaches. Case नहीं बना सकते तो you can write down here directly what? You should write down here directly क्या है आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स, चारों को ही चाहिए आपको, तो यू शुड गो हियर विद द 4p4 विच इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन हो रहा है क्लाउडी का, क्लाउडी क्लाउडी क्लाउडी, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल.
4 factorial divided by 3 factorial करेंगे तो result will be 4 only. When we are solving, we can get here 1 by 16 multiply with the 4, which is giving you the result 1 by 4 only. तो आपका जो final answer आना चाहिए वो आएगा कितना बेटा? 1 by 4. Alright. So I hope you can understand मैंने ये क्यों लिखा है. I'm giving you the detailed explanation of this one. 3 cloudy और 1 sunny है ना. अरे बाबा cloudy, cloudy, cloudy और sunny. I am having these 4 objects and I want to arrange. ये simple हम permutation में पढ़ते हैं. We already discussed this one. So what I can see, I am having 4 objects. Out of these 4 objects, मैम 4 में से 4 चाहिए. 4p4 divided by number of repetition which is 3 factorial. So this is nothing but 4 factorial by 3 factorial. 4 बाहर आ जाएगा, 3 factorial गया. The result is nothing but 4 only. या फिर कोई बच्चा यहाँ से cases बनाना चाहे कि मैम I want to go with the cases cloudy, cloudy, sunny, cloudy, cloudy, sunny, cloudy, cloudy, sunny, cloudy, cloudy, और sunny, cloudy, cloudy. So this is your choice. In this case also you are having 4 possibilities. So you can multiply with the 4. जहाँ जो comfortable है, accordingly you can approach. So this is your okay, the required probability multiply with the number of outcomes, मतलब number of arrangements, internal arrangement. तो 4 factorial by 3 factorial जब आप solve करेंगे तो it is giving you only 4 value और multiply करेंगे तो result is 1 by 4. Okay, I hope it is clear. तो वो सारे बच्चे जो पढ़े हैं हमसे basically, I'm sure all those students solve this question. Let's see next question. Here we are having, although we can take this question as an okay in the engineering mathematics also, but I will suggest you to go here with the aptitude because ये question aptitude segment में ही आया था और basic PNC का question आप यहाँ ले सकते हैं. ठीक है, चलिए next question we are having here. Complete the given sequence. Again this is related to the analogy. We are having first expedite, hasten, hurry. ठीक है, we need to understand ये जो तीनों words यहाँ mention है, expedite, hasten और hurry. All these three are meaning, they are having the same meaning, which is nothing but quickly. Expedite का मतलब भी किसी भी चीज को quickly करना, to do something quickly. Hasten, to do quickly. Hurry, to do quickly. So all these three words are having same. So surely the fourth one should be same to same. Disable, no. Retard, no. Provide, no. Accelerate. ठीक है? The correct word should be accelerate. So it should be okay, which is again the meaning escalator पे जो आप पैर रखते हो in the car, the same thing here. तो accelerate, which is giving you the result here option B. ठीक है, the same meaning they are having. So basic question from the verbal. We can see इस साल, okay, in this year the number of questions we are having from the verbal are also good. Verbal के अच्छे questions आ रहे हैं, but the questions are also basic English. They are not asking you the tough one. Till that 7th और 8th February जो दोनों पेपर में आए हैं, the questions are basic from the verbal only. चलिए, let's see. We are having one very good question. I will say one of the very easiest pattern of question. अगर आपने, if you watched my complete revision, one shot revision of probability, I told you this type of question. ठीक है, we had a discussion on this type of trick. If you will use my trick, you can solve this question literally in very less time. ठीक है, I will show you this question how to solve. So a die is thrown twice. What is the probability that sum of the outcomes is a prime number? What we are having? We are having here a dice when you are throwing it twice. We had a discussion on the triangle trick. अगर किस बच्चे ने नहीं देखा, you are having the paper on the next 14th and 15th, then please go to the probability one shot revision. There I already had a discussion on the sum of 2 dice and sum of 3 dice trick. So you can go through with that one. Okay, we are looking for prime numbers. ठीक है, तो what we need to follow? We should follow ma'am here the triangle trick. As we know very well the triangle tricks habitual है. We already had a discussion. ठीक है, so very easily we can use the triangle trick. According to the triangle trick, we can write down here the minimum sum. Here is the maximum sum and here is the middle sum. Okay, तो ट्रायंगल ट्रिक के हिसाब से मिनिमम, मैक्सिमम और मिडिल सम हम लिख देते हैं व्हेन वी आर थ्रोइंग 2 डाइस टुगेदर. इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, फिर 8. ठीक है, 8, 9, 10 और 11. द नंबर्स विच आर रिटन आउटसाइड आर नथिंग बट योर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटकम्स. ये सारे के सारे नंबर जो हमने लिखे हैं वो रिक्वायर्ड नंबर से ही आपसे पूछे जाएंगे. नाउ यू where we used to lack in the probability, we used to lack only with the favorable number of outcomes. So I can start writing here the favorable number of outcomes in the inside this triangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repeat the number 5, 4, 3, 2, 1 reverse counting के साथ. So the number which are written inside are your favorable number of outcome.
ठीक है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम. माय क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट प्राइम नंबर. ठीक है, अगर किसी बच्चे को ट्रिक नहीं पता है देन यू नीड टू गो हियर विद दिस. You should write down all the cases. Prime numbers, when we are throwing two dice, what are the prime numbers? Then possible prime numbers are nothing but here 2, 3, 5, 7 और 11. यही prime numbers होंगे. तो prime numbers can be 2, 3, 5, 7 और 11. इसके अलावा कोई और prime number नहीं होता है from 2 to 12. ठीक है. Now here although after 11 13 भी होगा, लेकिन sum की बात कर रहे हैं. sum of two dice पे maximum sum 12 है. So now I will write down directly here the required probability should be favorable by total. ठीक है. So favorable by total when you are throwing two dice तो total number of outcome तो 6 square 36 हो गया बेटा. Now your favorable number of outcome, please start counting from here. Let's go with the counting. I will write down here only the counting. So when we are throwing two dice, ठीक है, when we want number 2 तो फेवरेबल आउटकम है 1 प्लस इसके लिए 2 ये रहा. ठीक है. देन वी वांट 5 के लिए फेवरेबल आउटकम 4, वी वांट 7 के लिए फेवरेबल आउटकम 6, वी वांट 11 फेवरेबल आउटकम 2. तो 6 plus 4 10 और 5 15 I am getting here. So my favorable number of outcomes are 15, total number of outcome 36. Without making the number of cases, without finding कि अच्छा मैम 2 कब आएगा, 3 कब आएगा, 5 7, there is no need of making this one. You just need to make this triangle which will take hardly 15 to 20 seconds, and then in the next 10 to 12 seconds you can write down this and you can sum up the question, which will be 15 by 36. Your answer should be 15 by 36. I hope. ठीक है, वो सारे बच्चे जिन्होंने वो कंप्लीट वन शॉट डिवीजन देखा होगा, डैम श्योर उन सब बच्चों ने क्वेश्चन करेक्ट किया होगा और यूजिंग द ट्रायंगल ट्रिक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से बनाया होगा. Let's come with one more question. It is again of the verbal. It's talking about when it is raining peacock dance. ठीक है, स्टेटमेंट दिया है आपको when it is raining peacock dance. So based on the given statement, which option is necessarily true? First, it's talking about first when peacock dance, it is raining. ठीक है, peacock dance only when it is raining. When peacock are not dancing, it is not raining. When it is not raining, peacock are not dancing. ठीक है. अब स्टेटमेंट आपके पास है when it is raining peacock dance. इसका मतलब ये तय है कि जब जब बारिश आएगी, जब जब okay, whenever the rain is there, peacock will dance. इसका मतलब यही हुआ. तो first statement says when peacock dance, it is raining. No, it's not necessary. The rain is related to the peacock. Peacock is not related to the rain directly. ठीक है. फिर peacock dance only when it is raining. No, I don't think. It's not that. भाई ये तो उसकी मर्जी है ना. Peacock can dance when it's not raining also. It's not compulsory कि they dance only when the rain is there. ठीक है. When peacock when peacock are not dancing, it is not raining. Yes, this is true. जब peacock dance, ठीक है, peacock dance नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब बारिश नहीं आ रही है, ये हम बोल सकते हैं. ठीक है. So when it is not raining, peacock are not dancing. ये भी true नहीं होना चाहिए. When it is not raining, peacock are not dancing. ठीक है, मतलब जब बारिश नहीं आ रही है तो peacock dance नहीं कर रहे हैं. Again, we will not conclude, but we can conclude this one कि when it is raining, peacock dance. तो when peacock are not dancing, it is not raining. We can clearly connect with this one. ठीक है, ठीक है. All right, चलिए. So let's talk about the next question, which is related to the quantitative aptitude. As salespersons want to visit each city once and come to starting city again. Okay, it's not the quantity, it's again the question of logical reasoning. बोल रहा है एक सेल्स पर्सन wants to visit each city once and come to starting city again या starting point again. Then on which of the city network he can perform the visit. ठीक है, दो क्वेश्चन, दो फिगर आपको दिए थे. They give you these two figures and you need to identify which one is correct figure. So you are having option only first is possible, second is possible, both are possible, and both none of them is possible. Yeah, neither of them is possible. The question is talking about the salesperson is going from one city, मतलब starting point, ठीक है, each city once, and he is going each city once only and come to starting point again, और फिर उसके बाद visit करके वापस starting point पे आ रहा है. तो look at here, I will start from this one. ठीक है, I'm making here only what should be his route. His route should be यहाँ से आया, फिर इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया. ठीक है, फिर यहाँ आएगा, then he should go like this, then he should go like this, then this, और ये जाके स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल गया. कैन यू सी? ठीक है, हर एक सिटी को एक ही बार विजिट किया, नो रिपीटेशन. ठीक है, एवरी सिटी ही इज विजिटिंग ओनली वंस एंड देन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट अगेन he can okay reach to the ending point. While I am talking about this figure, अगर इस फिगर से स्टार्ट किया, यहां से
यहां से अब नाउ यू आर हैविंग, आफ्टर दैट यू आर हैविंग टू ऑप्शन, इधर यू कैन गो देयर और यू कैन गो हियर। अगर यहां आए तो वापस इधर नहीं जा सकते, रिपीटेशन हो जाएगा, और इधर गए तो वापस फिर इधर नहीं आ सकते, रिपीटेशन हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट, है ना। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन शुड बी दिस रूट 1 which is talking about only one is possible. The route 1 possible है without repetition. He can go. I'm sure you can understand how he's going. I'm showing you again. He should go like this, one, then like this, then like this, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे करके ये अब स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आके मिल जाएगा। तो इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हुआ था और यहीं आके एंड हो गया। ऑलराइट, इफ दिस इज द क्वेश्चन देन दिस मस्ट बी द आंसर। चलिए फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास है। प्राइस ऑफ स्टॉक 1 इज ₹50, स्टॉक 2 इज ₹80, ठीक है। टॉकिंग अबाउट देयर आर टू टाइप ऑफ स्टॉक्स। फर्स्ट स्टॉक की प्राइस ₹50 है और सेकंड स्टॉक की प्राइस है ₹80। दिस इज टॉकिंग अबाउट फॉर ईच स्टॉक दिस इज द प्राइस, ठीक है। If one person sold 2 quantities of stock 1 for ₹55 each and 1 quantity of stock 2 in ₹70 each, then find his total net profit. We need to find out his total net profit. So this is a question of profit and loss. Let's check it out. First of all, what is his total cost price, and then we can go with his here total selling price. So total cost price. Total cost price means what is the price available. Total cost price he is having ₹50 for first stock. So ₹50 और प्लस सेकेंड वाले में क्या है, स्टॉक 2 इज ₹80 ईच, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हियर, एक काम करते हैं, यहाँ एक छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं। सो इट गिव्स यू द क्लियरिटी कि, अरे सॉरी, इट गिव्स यू द क्लियरिटी कि व्हाट ही परचेज एंड व्हाट ही इज सेलिंग, ठीक है। सो ही इज हैविंग 2 स्टॉक, स्टॉक फर्स्ट, स्टॉक सेकेंड, ठीक है। सो इट शुड बी द क्वांटिटी एंड देन हियर शुड बी द प्राइस, ठीक है। सो क्वांटिटी ही परचेज व्हाट, उसने क्या किया, जब सोल्ड किया मतलब होगा तभी तो सोल्ड किया है, उसकी प्राइस ये थी। द पर्सन सोल्ड 2 क्वांटिटीज ऑफ स्टॉक 1, स्टॉक 1 की उसने 2 क्वांटिटीज ली और स्टॉक 2 की उसने 1 क्वांटिटी ली, ठीक है। एंड हियर वी कैन गो विद, एक काम और भी कर सकते हैं हम, वी कैन मेक, लेट्स मेक वन मोर द टेबल, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं इस टेबल को, एक ही जगह बना लेते हैं, सो वी कैन सॉल्व दिस क्लियरली हियर ओनली, ठीक है। काम करते हैं, ये भी हटा दो, लेट्स मेक इट हियर ओनली अ बिग टेबल, सॉरी। सो यहीं पे हम उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वेरी कर लेंगे, ठीक है। सो वी कैन गो हियर विद द स्टॉक, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल एंड वी कैन गो विद दिस वन, स्टॉक 1 और ये रहा आपका स्टॉक 2, ठीक है। I want to end here only this और इसको यहाँ end कर दो। After that you are having here the first option is for the quantity. Let me change the color. Quantity for stock 1, ठीक है, 1 और 2 दोनों के लिए। फिर ये उसका cost price और फिर उधर आ जाएगा selling price. So I will write down here the quantity, then the CP and then the SP. He purchased stock 2, stock 1 जो उसने परचेज किया वो 2 स्टॉक्स परचेज किए हैं और स्टॉक 1 की जो प्राइस दी है वो कितनी दी है बेटा, ₹50 दी है प्राइस, ठीक है। और इसकी कितनी दी है, इसकी ₹80 दी है, इसकी ₹80 दी है, ये तो परचेज करने के लिए दी है। अभी हम देखते हैं थोड़ा और अच्छे से। तो क्वांटिटी इसकी 2 है और इसकी कितनी है, इसकी 1 है, स्टॉक 2, 1 क्वांटिटी ऑफ स्टॉक 2, ठीक है, और इसकी है 1। So when he purchased 2 into 50, 2 into 50 मतलब ₹100 तो यहाँ लगाए और प्लस 1 into 80 means ₹80 यहाँ लगाए। तो I can write down his total cost price is nothing but 100 plus 80 मतलब ₹180 हो गया बेटा total cost price. Now when he sold, please try to understand, when he sold ₹55 for each. उसने जब सोल्ड किया उसकी प्राइस तो ये थी लेकिन उसने थोड़ा प्रॉफिट लेके सोल्ड करने की कोशिश की। तो ही सोल्ड ओके ₹55 ईच स्टॉक फॉर द स्टॉक 1 एंड ₹70 फॉर स्टॉक 2, ठीक है। तो ₹55 व्हेन ही सोल्ड ₹55 1 स्टॉक, तो 2 into 55 दिस टाइम नॉट ₹50, है ना, ठीक है। तो इट शुड बी 110 और यहाँ लिया 1 into 70 which is nothing but 70. So we can write down his total selling price is nothing but
वापस 110 plus 70 which is 180. We can see the total selling price and total cost price both are same to same here. So selling price and cost price both are same to same. It means what? It means ma'am he is having neither profit nor loss. मतलब no profit no loss वाली condition है. My question is asking find out his net profit. If someone will ask you, I can say this is nothing but net profit. Net profit कितना हुआ? मैम no profit no loss वाली condition है. So it should be nothing but 0%. उसको ना तो profit हो रहा है ना ही उसको loss हो रहा है. So we can go with his profit percentage should be 0%. Why? Because ये जो value है total cost price और ये जो value है total selling price both are same to same. So he is having okay no profit no loss, but still क्योंकि option में लिखा नहीं है, so that's why we can go here with the option B. I hope it is clear to everyone. Thank you.